Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. I am Khushbu Harsh and today the topic is we'll study 50 MCQs on food process operation. The student who have cleared FSSAI CBT 1 exam, this video is gonna be very helpful for you because it is purely based on CBT 2 exam. So let's get started. Before moving forward, let's talk about the course which Agriculture and GK have on their platform. That is for FSSAI CFSO TO CBT 2 exam. It is a complete course. In this course, we will be giving you complete notes as per the syllabus. You will get printable study material. You will get YouTube classes and class notes. You will get question bank that will be in the form of ebook. You will get quality content for the exam, okay, and all these things you will get at just rupees 899. So to enroll in this course, the link is in the description box, so please go and check. If you have any query about the course, you can also contact us via our WhatsApp number, which is already mentioned in the description box. Other than this, you can enroll via our app, that is Agriculture and GK, or you can go to our website, that is agriculturedk.in, and then you can enroll to our classes. So let's get to our first question, that is MOFPI was set up in the year. So first of all, we'll study about what is MOFPI. That is very important. What is MOFPI? So MOFPI is Ministry of Food Processing Industries. Okay, what is MOFPI? It is Ministry of Food Processing. It was set up in the year 1998. Okay, now ये करता क्या है? Okay, our first question should be what is the role of MOFPI? ये करता क्या है? तो it regulates law which are related to food processing in India. Okay, ये क्या करता है? It regulates the laws which is related to food processing in India. तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए. ये सेटअप हुआ था 1998 में. ओके, MOFPI वाज सेटअप एट 1998. Our next question, who is the father of green revolution? So we can give the answer of this question in two parts. First of all, if we talk about world, then the first person to do this green revolution in world was Norman E. Borlaug. Okay, so Norman E. Borlaug has done green revolution in the world the first time in the year 1960. If we talk about in India, it was done in 1965 by MS Swaminathan. Okay, MS Swaminathan has done green revolution in India in 1965 and Norman E. Borlaug has done green revolution in the world in 1960. If we talk about our second option, that is V. Coren, he was known as father of white revolution. Okay, he was known as father of white revolution. White revolution means what? It was only for milk and milk products. Okay, mainly for milk you can say. Okay, so he has done white revolution for milk and milk products. Our next question, that is first transgenic crop. If we talk about transgenic crop means if we take one crop, we take the gene from this crop and we put it in other crop. So that is called as transfer of gene from one crop to, this is one crop, this is second crop. Transfer of gene from one crop to second crop, that is called transgenic crop. Okay, so the first transgenic crop was tobacco. Okay, the answer is option number A, tobacco. Our next question, that is golden revolution was for. So golden revolution was for, our option is B,
fruit. Golden revolution was for food. If you talk about other revolution, right, red revolution, it was for meat and meat products. Okay, it was for meat and meat products. If we talk about yellow, yellow was for oil seeds. Okay, it was for oil seed production. Next question. Which mineral is responsible for clotting of bone and bone formation? By the word bone formation, we can get the term that bone है तो calcium ही होगा. Okay, it is somehow related to calcium. So the answer of this question is calcium. Option number C. Now the new fact is this, that calcium is also responsible for the clotting of blood. Okay, it is also responsible for the clotting of blood. If we talk about vitamin D, vitamin D helps to absorb calcium in intestine. Okay, so vitamin D plays an important role in absorbing calcium. If we talk about magnesium, magnesium is helpful in the enzyme mechanism. Okay, it is helpful in enzyme mechanism. So if you talk about clotting of blood and bone formation, that is for calcium. Option number C is the correct option. Okay. Now our sixth question, which mineral is required for the development of sound teeth and resist tooth decay? That is option number C. Fluorine is very important for this. If we talk about chromium, chromium is very helpful in glucose metabolism. It is very important in glucose metabolism. If you talk about iodine, then iodine is a part of thyroid hormone. Okay, it can also cause goiter. If deficiency of iodine is there, it can also cause goiter. Okay, if we talk about sodium, so it is very helpful in our brain mechanism. Which substance is used in fat and fat containing substance to retard oxidation? The correct option is antioxidant is used in fat and fat containing substance to retard oxidation. Now some of the example of oxidation, antioxidant are, you can say BHA. BHA means butylated hydroxyanisole. You can also say BHT, butylated hydroxytoluene. Okay, now this antioxidant can be natural also. It can be natural antioxidant. So natural antioxidants contains lecithin, tocopherol, vitamin C, vitamin E. These all are natural antioxidant. Okay, if we talk about coloring agent, then coloring agents are the agents which are used to give color to the food, okay, or any substance. If we talk about catalyst, catalyst increase rate of reaction, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करते उस रिएक्शन में. ओके, मींस इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. जो रिएक्शन पहले अगर 5 मिनट में होता है, देन कैटलिस्ट को ऐड करने पे इट इज पॉसिबल कि वो 2 मिनट में हो जाए, बट कैटलिस्ट का कोई रोल उस रिएक्शन में वो अपना रोल नहीं लेकर आता है. कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. ये क्या करता है, बस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है और कुछ नहीं करता. एक एग्जाम्पल अगर हम लोग को देना हो कैटलिस्ट का, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज निकल. ओके, now if you talk about emulsifier, what are emulsifier? Emulsifier are, they stabilize the emulsion. ये क्या करते हैं, stabilize करते हैं emulsion को, that is oil in water emulsion को ये stabilize करते हैं ताकि oil और water एक दूसरे से अलग ना हो जाए. तो वो इनका काम है, इसको stabilize करके रखना. इसका भी example we can say lecithin is an example of emulsifier. So the answer of this question is antioxidant, जिसको कि हम लोग फैट और फैट कंटेनिंग सब्सटेंस में ऐड करते हैं टू रिटार्ड ऑक्सीडेशन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलरिंग एजेंट इज बटर, चीज एंड मार्जिनिन इज, our right option is annatto. Annatto is used for coloring agent.
in butter, cheese and margarine. Okay. If we talk about lycopene, it is the pigment present in tomato. Okay. We have talked about BHA already. It is an antioxidant. Okay. If we talk about Bioxin, the first option, Bioxin is used to treat bacterial infection. ओके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है देन वी यूज Bioxin. ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लीवनिंग एजेंट? So ammonium carbonate is a leavening agent. Our option B, sodium bicarbonate is also an leavening agent. Alcohol is not a leavening agent. So option C is the right option. Alcohol is not a leavening agent. Yeast is also used as leavening. Sodium bicarbonate is also used as leavening agent. Ammonium bicarbonate is also used as leavening agent. Okay. Now our 10th question, cream separation is done by, the answer is centrifugation. Okay, we do cream separation with the help of centrifugation. Centrifugation में क्या होता है? Centrifugation में there is a force which acts on it, that is centrifugal force. Okay, इसमें क्या होता है? Lighter particle comes in the middle और heavier particle outer surface में चला जाता है. Okay. So if we take example of milk, so cream is a heavier particle, lighter particle, that it will come in the middle and the other particle other than cream will come to the outer surface. So we can easily separate cream from milk. So if we talk about sedimentation, our second option, that is sedimentation. Sedimentation is separating dirt from raw material. Okay. तो इसमें क्या होता है? पार्टिकल सेटल हो जाता है पार्टिकल, तो उसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल जो होता है वो अलग हो जाता है, रॉ मटेरियल हमारा अलग हो जाता है उससे, तो दैट इज नोन एज दिस ड्यू टू ग्रेविटी. सेडिमेंटेशन ग्रेविटी की वजह से होता है. इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर. इसमें क्या होता है? लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू गैस. ओके, सो द 10th इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज इट कन्वर्ट्स gas into liquid. Okay, evaporation is liquid into gas and condensation is gas to liquid. Okay, so our correct option is centrifugation. What is the mode of heat transfer in solid? So heat transfer is solid is done with conduction. The term is known as conduction. What is convection? Convection is also transfer of heat from one place to another, but due to movement of liquid or gas. Okay, due to movement of liquid or gas, we do convection. If we talk about radiation, it is transfer of energy through electromagnetic waves. Okay. Conduction we have already studied. Refrigeration means it is a type of preservation technique used to preserve food. Okay, so our correct option is conduction. 12th question, that is which type of body absorb a definite fraction of incident energy? Okay, so our correct option is gray. Gray type of body absorb, जैसे कि अगर इसमें incident light ऐसे आ रहा है, it will absorb some of the light and it will give back all the other light. Okay, ये कुछ फ्रैक्शन को absorb करता है और कुछ को bounce back करता है, that is gray body. If you talk about black body, ये इंसिडेंट अगर हो रहा है लाइट, it will be absorbed by the black body, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा. If we talk about white body, then if these are in the what to say, these are inserted light, then every light will be reflected in case of white body. Okay, red body ऐसा कोई चीज नहीं होता है, red body. So correct option is gray body. Okay, if we talk about Reynolds number, so if the Reynolds number is less than 2100, then flow is, our right option is B, laminar.
Okay, Reynolds number is denoted by this. So if Reynolds number is 2100 to 4000, then our answer is transition. Okay, and if it is greater than 4000, then it is turbulent. These are our type of flow of liquid. Okay, so our right option is laminar. 14th, it is the ratio of partial pressure of water of the product to the vapor pressure of pure water at same temperature. The answer is water activity. We write it as AW. Okay, so water activity is the amount of water present inside the food which can attract microorganism or which can give a good condition to microorganism to grow. सो वाटर एक्टिविटी ऐसे तो 1 तक होता है मैक्सिमम, पर इस अगर जैसे हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ग्रोथ रेट होता है, कौन से वाटर एक्टिविटी पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, दैट इज डिफरेंट. सो इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, it grows on 0.9 water activity. If we talk about yeast, it grows on 0.88. If we talk about molds, it grow on 0.80. So like this, ठीक है. Main are these three, और इसके नीचे भी grow करते हैं. If we talk about size ratio means length by breadth, or you can say width by height, etc. Length और breadth का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं. If we talk about screen aperture, जैसे आपका स्क्रीन है उसमें होल्स होते हैं. ओके, सो व्हाट इज स्क्रीन अपर्चर? साइज ऑफ द ओपनिंग थ्रू विच मटेरियल कैन पास. ये इसका जो साइज होता है एक होल का, दैट इज स्क्रीन अपर्चर, कि उसमें से मटेरियल पास करना है तो उसका साइज क्या है वो. डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बट अंडर कंट्रोल कंडीशन. इसमें कंट्रोल कंडीशन होता है डिहाइड्रेशन में, अदरवाइज ड्राइंग में कंट्रोल कंडीशन नहीं होता है. दैट इज सिंपली सन ड्राइंग. वी डू उसमें कुछ भी हम लोग के मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल एनी condition in that, but dehydration we can control the temperature, we can control the atmosphere, we can control the water, humidity and all. Our 15th question, uncontrolled removal of moisture, the same question, that is drying. Okay, uncontrolled moisture removal हुआ तो drying, अगर controlled हुआ तो dehydration. Because drying mainly contains what? Sun drying, and sun drying में we cannot control the condition, it is by all natural process. But in dehydration we can control the condition according to our need. Which of the following is known as lyophilization? Okay, so the correct option is freeze drying. Freeze drying is also known as lyophilization. Now what is freeze drying? Here low temperature drying is done. Low temperature dehydration is done. Means what? Water gets converted into ice, then ice get converted into vapor, and like this we take out the water present inside the food and we automatically dehydrate the food. Okay, we automatically dry the food. If we talk about spray drying, here liquid is converted into powder due to high heat. Okay, if we talk about drum drying, then one drum is heated and then moisture is removed. Means the food particles goes inside the drum and then the moisture is removed in the drum and the dehydrated product came out from the drum. Okay, now drying is already discussed about it. Uncontrolled method of removing moisture. Okay, next, process done at temperature above 100 degrees Celsius and kill all type of microorganism. So the right option is option number D, that is sterilization. So sterilization kill all type of microorganism and it is done above 100 degrees Celsius. If we talk about LTST and HTST, these are type of pasteurization. There is difference in temperature and time, but these are in pasteurization. Pasteurization means killing of pathogenic
microorganism by means of heat. Okay, so if we talk about LT, then LT is 61 degrees Celsius for 30 minutes, and if we talk about HT, it is 71.8 degrees Celsius for 15 seconds. Okay, if we talk about homogenization, then homogenization is fat globules are broken into smaller particles so that they are mixed properly, or you can say uniformly, into product. Okay, so these are fat globules. Fat globules stuck to each other and made a large particle. So in homogenization we break the fat globules into small particles so that they can be uniformly mixed throughout the liquid, or you can say the product. Our next question is, starch is insoluble in the right answer is cold water. Okay, starch is not soluble in cold water. We have to heat it and then it gets dissolved. 19th is transmissivity of black body is. Okay, transmissivity का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लाइट, और वी कैन से कि लाइट कितना आ रहा है और कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, दैट इज नोन एज दिस थिंग. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द आंसर नंबर 1, 0, बिकॉज जब ब्लैक बॉडी पे कोई भी लाइट इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है. नो, नहीं करता, वो सारा अब्सॉर्ब हो जाता है, तो इसका ट्रांसमिसिविटी 0 होता है. ओके, so coming back to next question, hammer-mill works on the principle of option B is right. Hammer means what? This is the hammer. Okay, if we talk about hammer in our houses, we know that in hammer एक डिस्टेंस से हम लोग उसको इम्पैक्ट करते हैं, मीन्स एक डिस्टेंस पे ले जाके हम लोग उसको प्रेशर देते हैं. तो दिस फोर्स इज नोन एज इम्पैक्ट फोर्स, कि हम लोग उसको प्रेशर देते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे. तो hammer-mill works on the principle of impact. Okay, 21, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइस मिलिंग इज, इट इज वेरी, अगर हम लोग राइस को मिल कर रहे हैं तो हम लोग का मेन मोटो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर मेन मोटो? आवर मेन मोटो शुड बी मैक्सिमम हेड राइस. वी हैव टू गेट द मैक्सिमम हेड राइस. अभी हम लोग ब्रोकन क्यों करेंगे? मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ब्रोकन तो कुछ होता नहीं है. ओके, ब्रोकन इज यूज फॉर सम अदर थिंग. अगर ब्रान चाहिए तो ब्रान का कोई यूज नहीं होता है, ब्रान नहीं खाते हैं लोग, तो ब्रान को फिर हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है राइस मिलिंग का? सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मैक्सिमम हेड राइस, बिकॉज हेड राइस इज मोस्टली कंज्यूम्ड इन द पब्लिक. सो मैक्सिमम हेड राइस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइस मिलिंग. पार बॉइलिंग ऑफ पैडी इज, द ऑप्शन इज हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, बिकॉज पार बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं? वी हीट the paddy soaked in water. मतलब जो पैडी होता है that is in water and we heat the water with paddy, तो इसको हम लोग पार बॉइलिंग करते हैं. इज हाइड्रोथर्मल. बाय द नेम ओनली वी कैन गेट द थिंग दैट हाइड्रो मीन्स वाटर एंड थर्मल मीन्स हीट. ओके, तो अब पार बॉइलिंग का बेनिफिट क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पार बॉइलिंग? तो पार बॉइलिंग हेल्प्स टू सील एनी क्रैक इन द राइस. अगर राइस में कोई भी क्रैक है तो पार बॉइलिंग से वो सील हो जाता है, बिकॉज इसमें जो स्टार्च होता है वो जेलेटिनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सील हो जाता है क्रैक, और राइस बिकम्स मोर हार्डर, ज्यादा हार्ड हो जाता है, यील्ड ज्यादा होता है उसका, और ब्रेकेज कम होता है. इसी कारण पार बॉइलिंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी पैडी. आप क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज COD वैल्यू इज ऑलवेज, आवर ऑप्शन ए इज राइट, ग्रेटर देन BOD वैल्यू. क्यों ऐसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानना है COD क्या होता है. COD इज, 1 minute. COD means amount of oxygen required by microorganism to break down organic matter. Okay, so the organic matter which is present in case of water, we will take the example.
So if we take example of water, the amount of oxygen which is required to break down the organic matter is known as COD. In case of BOD, we also break down the, or here also we break down the organic matter, but the difference is that here via oxidation we do it. Okay. Here the definition of BOD is amount of oxygen required to break down the organic matter via ऑक्सीडेशन. ओके, सो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, पर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं. अब ऑब्वियस से बात है, अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रोसेस में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और बीओडी में इट इज अ स्लो प्रोसेस, तो इसमें धीरे धीरे होगा बिकॉज इट इज ऑल ऑर्गेनिक. तो इसी कारण सीओडी वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर होता है बीओडी वैल्यू से. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट सीओडी, द फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन demand, and BOD is biological oxygen demand. Okay. Next, rotameter is used to measure. What is rotameter and what it is used to measure? Rotameter is used to measure flow rate of liquid. Okay, so our right option is rotameter is used to measure flow rate of liquid. Okay, if we talk about viscosity of liquid, our next option, viscosity of liquid हम लोग viscometer से देखते हैं. Okay, viscometer is used to measure the viscosity of liquid. Concentration of liquid refractometer से देखते हैं. ओके, और यू कैन से TSS मेजर करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिटेड प्रिजर्वेटिव इन फ्रूट जूस एंड बेवरेज? आवर ऑप्शन इज अस्कॉर्बिक एसिड. अस्कॉर्बिक एसिड इसका हम लोग यूज करते हैं टू प्रिजर्व फ्रूट जूस एंड बेवरेजेस. हम लोग पहले सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते थे, बट ये अभी मना हो गया. क्यों? बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लीचिंग इफेक्ट दे देता है. ये कलर को क्या करता है? डिग्रेड कर देता है अगर ज्यादा समय तक प्रिजर्व करते हैं तो इसी वजह से वी हैव स्टॉप यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड, और अभी अस्कॉर्बिक एसिड वी यूज मोस्ट ऑफन. ओके, आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, देन एग्रीकल्चर एंड जीके हैव एन प्रोग्राम फॉर देम that is for Telangana State Public Service Commission Food Safety Officer. It is a complete course. In this course we will give you complete notes as per the syllabus. Paper 1 and paper 2 will be included in this. YouTube classes will be given, previous year paper will be given, test series for practice will be given, one whole question bank will be given. All these things will be given in price of 1799. Okay, 1799 में इतना सारा चीज आपको मिल रहा है. अगर आपको इनरोल करना है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पर आपको लिंक मिलेगा. यू कैन ऑल्सो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप. द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको ऐप से इनरोल करना है तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, दैट इज एग्रीकल्चर एंड जीके, एंड देन यू कैन इनरोल, और यू कैन गो टू आवर वेबसाइट agriculturedk.in and then you can enroll to the course. Okay. Our next question, that is vinegar contains what percent of acetic acid? The right answer is 4% of acetic acid generally vinegar contains. Okay. Perry is a fermented product of, the answer is pears. Pears का fermented product perry कहते हैं. अगर हम लोग किसी और का जाने, then ferry. Ferry is a fermented product of cashew apple. Okay. If we talk about cider, cider is an fermented product of apple. Okay. If we talk about wine, it is also a fermented product of grapes. Okay.
बैक्टीरिया केपेबल ऑफ ग्रोइंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 से 300, अगर जिस प्रेशर पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, इट इज नोन एज, what is it is known as barophobic. Okay, barophobic is the type of bacteria which can grow at the pressure of 200 से 300 प्रेशर तक ग्रो करता है। if we talk about barophiles, okay, ये ग्रो करता है प्रेशर greater than 400 to 500. okay, if we talk about baroduric, they can tolerate and survive, they can tolerate and survive high pressure, but ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। ग्रो एट मतलब ये 500 से 200 प्रेशर तक ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सर्वाइव और टॉलरेट कर सकते हैं हाई प्रेशर को। अगर हम लोग बात करें थर्मोफिलिक का, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो करते हैं एट टेम्परेचर 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये ग्रो करते हैं थर्मोफिलिक। बैरोफोबिक, बैरोफाइल्स और बैरोड्यूरिक है वो प्रेशर से रिलेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस प्रेशर पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। बट इफ यू टॉक अबाउट थर्मोफिलिक, ये टेम्परेचर बेस्ड है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। थर्मोफिलिक के अलावा अगर हम लोग टेम्परेचर बेस्ड देखें, वी हैव मेसोफिलिक जो कि 20 से लेके 45 तक ग्रो करता है। आई थिंक थर्मोफिलिक जो है वो 40 से लेके 40 एंड 40 एबव ग्रो करता है। ओके, मेसोफिलिक 20 से 45 तक ग्रो करता है। और इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज साइकोफिलिक, ये 20 से नीचे ग्रो करता है। ओके, ये 20 जो साइकोफिलिक होता है वो 20 से नीचे ग्रो करते हैं। 29th क्वेश्चन, दैट इज लो एसिड फूड हैव पीएच। तो लो एसिड फूड का पीएच कितना होता है? 5.0, दैट इज 5, और उससे ज्यादा हुआ तो लो एसिड फूड होता है। एसिड फूड का भी बहुत सारा टाइप होता है, लो एसिड का तो इतना होता है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट मीडियम एसिड, मीडियम एसिड का 4.5 to 5 होता है। इफ वी टॉक अबाउट एसिडिक, उसका 4.5 से 5.3 होता है। इफ वी टॉक अबाउट हाई एसिड, इसका होता है लेसर देन 3.7। ओके, एसिडिक फूड का आप इधर चेंज करो, ये होता है 3.7, मतलब 3.7 से अगर 4.5 के बीच में है तो एसिड फूड है, और अगर 3.7 से नीचे है तो हाई एसिडिक फूड हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन फिल्टर मटेरियल इन फिल्टर आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज सिरेमिक से बना होता है जो मेम्ब्रेन होता है। 31, mild heat treatment given to food to inactivate enzyme is known as, it is known as blanching. Okay, blanching is the mild heat treatment given to food to inactivate enzyme. इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग हीट देते हैं फूड को to inactivate the enzymes. अगर बॉइलिंग करें तो बॉइलिंग में भी हम लोग वही करते हैं, हीट ही देते हैं उसको। ओके, पास्चराइजेशन में क्या करते हैं? पास्चराइजेशन मैंने अभी तुरंत इसके पहले डिस्कस किया है। इसमें भी हम लोग जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वी किल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इरेडिएशन में क्या करते हैं? इरेडिएशन में हम लोग इनएक्टिवेट करते हैं अनडिराइजेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम। जो भी अनडिराइजेबल एंजाइम हुआ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, वी डीएक्टिवेट इट विदाउट चेंजिंग एनी फीचर ऑफ फूड। मतलब फूड में ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो मोर चेंजेस इन द फूड आफ्टर डीएक्टिवेटिंग एंजाइम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज इरेडिएशन। Method in which continuous electric current is passed through food to heat it quickly as well as to maintain its quality is known as, it is known as ohmic heating. Okay, ohmic heating में हम लोग continuous electric current देते हैं जल्दी गर्म करने के लिए, but
क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए उसमें। बॉइलिंग तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। फ्रीजिंग मतलब वही होता है हम लोग फ्रीज करते हैं, टेम्परेचर कम देते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। होमोजेनाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड, फैट ग्लोब्यूल्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, दैट इज होमोजेनाइजेशन। 33 which method is used to remove iron from ferrous particles, that is magnetic separator। नाम से ही समझ आ रहा है magnet, magnet attracts iron, so इसी कारण magnetic separator we use for removal of iron। If we talk about screening, screening means we have a screen and sieving बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग मटेरियल रख के ये वाइब्रेट करता है sieve, और फिर हम लोग उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। If we talk about aspiration, ये एयर की मदद से होता है, ओके। एंड हैंड पिकिंग तो we all know it is done by hand। 34 that is enzyme are dash in nature, the option is proteinous in nature, enzyme are proteinous in nature। High amount of ascorbic acid is found in, answer is C amla, amla has सबसे ज्यादा ascorbic acid in it, okay। CFTRI is located in, answer is Mysore। What is CFTRI? It is Central Food Technological Research Institute। It was established in the year 1950, okay। It is in Mysore। 37 yeast react on dash while alcoholic fermentation, the answer is carbohydrate। It's react on carbohydrate while alcoholic fermentation to produce alcohol obviously, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, fermentation। Fermentation is the process of conversion of carbohydrate to alcohol via yeast। yeast ये काम करता है, okay। Final product which we get after sugar fermentation is ethyl alcohol we get, option number B is the right answer, okay। Goiter is caused due to the deficiency of, the right answer is iodine, we have discussed it already। विटामिन डी का deficiency होगा then it will cause rickets, okay। it in rickets bone जो होते हैं वो soft हो जाते हैं, bone become soft, okay। कैल्शियम का अगर कमी होगा तो हाइपो कैल्शियमिया होगा, ओके। अगर विटामिन ए का कमी होगा then नाइट ब्लाइंडनेस। Next question, energy provided by fat in human body। Fat, what type, how much kilocalories of energy we get from fat? If we eat fat, how much calorie we will get? The answer is 9 calorie। If we talk about carbohydrate and protein, we get 4 calorie, okay, kilocalorie, sorry। 41 precursor of vitamin A। What is the precursor of vitamin A? The precursor of vitamin A is beta carotene, means we can first from beta carotene we have derived vitamin A। Precursor means from beta carotene we have derived vitamin A, okay। Irradiation is also known as, the answer is co-distillation। Irradiation is also known as co-distillation। If we talk about freezing, it is a preservation technique, we have studied about it। Waxing is to put the wax upper the surface of food, it is also a preservation technique used to protect the food for a longer period of time। If we talk about this Hurdle technology, Hurdle technology is used to preserve, okay, to get maximum microbial inactivation by combining 1 or 2 subparameter। 2-3 पैरामीटर को हम लोग मिला के एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, दैट इज हर्डल टेक्नोलॉजी। अफ्लाटॉक्सिन इज कॉज्ड ड्यू टू, आवर राइट ऑप्शन इज मोल्ड। मोल्ड कॉजेज अफ्लाटॉक्सिन। स्पेशली मोल्ड्स में भी कौन से मोल्ड होते हैं, एस्परगिलस फ्लेवर्स, एस्परगिलस पैरासाइटियस, ओके। बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या होता है, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। ईस्ट जो कि हम लोग कह सकते हैं फंगी का है टाइप,
they produce mycotoxin. Okay. Headquarter of WHO is in, sorry, it is F. Headquarter of WHO is in, the right answer is Geneva. What is WHO? WHO is World Health Organization. It is World Health Organization. ये सेटअप हुआ था 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड में. World Food Day is celebrated on, it is celebrated on 16th of October. If we talk about 5 June, it is World Environment Day. If we talk about 7th June, it is World Food Safety Day, जो कि 2018 से we are celebrating this day, celebrated by WHO. Okay, and theme क्या था इस बार का? Safer food, better health. 15 August we all know, Independence Day. Next question. Pigment responsible for red color in meat. The right answer is myoglobin is responsible for the red color in meat. If we talk about lycopene, it is the pigment present in tomato. Anthocyanin is blue, purple or green pigment in fruit. Hemoglobin is the pigment of blood. Brine concentration is tested with the help of, it is tested with the help of salometer. Okay. If we talk about hydrometer, it is used to measure density of water. Okay. Refractometer is used to measure TSS of liquid. Speedometer, by the name only we can get, it is used to measure speed of vehicle. Okay. Appetization is also known as, canning. Canning was discovered by Nicholas Appert in the year 1809. इसी वजह से the name is appetization. Okay. What is canning? It is the method of preserving food from spoilage by storing it in the can. Can में हम लोग food store करते हैं, hermetically sealed can होता है. Okay, और उसको sterilize करते हैं by heat. Which of the following is intrinsic factor? Intrinsic means internal factor and extrinsic means external factor. Here we are talking about growth of microorganism. So which of the following is an intrinsic factor? The factors are pH and water activity. These two factors are the intrinsic factor which is responsible internally for the growth of microorganism. Limiting factor for membrane filter is, the option is, the right option is option number D, that is 1 and 2. Fouling means what? If we have membrane and we have this type of thing, if these sieves are stuck with all the material, the sieve should be open so that the passing of material is very free flowing. But in case if the sieves are not open, if they are stuck with large particles, so the flow of liquid or flow of the material will not be followed. Sorry, so it will cause fouling. Okay. If we talk about electrical, this is if we talk about shear damage, this is also known as, this is also like, if the membrane is damaged, so it is also, this is also going to be a limiting factor for membrane filter, because the membrane will not work properly and it will not do its function properly. So that is a limiting factor. This takes us to the end of our video. If you like the video, then please do like, subscribe and share as much as you can. For more such videos, follow our channel Agriculture and GK. See you then next time. Thank you.